रशिया आने का मेरा प्लान था टू विजिट द आर्कटिक रशिया, जो है रशिया का वो बड़ा पोर्शन जो आर्कटिक सर्कल में फॉल करता है, स्पेसिफिकली बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द मैग्निफिसेंस ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स। तो मॉस्को में लैंड होके एक रात रहने के बाद द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई हेडेड टू मॉस्कोज मेन एयरपोर्ट द शेरेमेतिवो एयरपोर्ट टू बोर्ड माई फ्लाइट टू रशियाज नॉर्दर्न मोस्ट सिटी मुरमांस्क। And in 2 hours, I landed in Murmansk. ओके तो फाइनली मैं मुरमंस्क पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे 4 डिग्रीज का टेम्परेचर है और 4 डिग्रीज वैसे नॉर्मल होता है, मतलब ठंड में ठंड होता है, बट बहुत ज़्यादा विंडी है यहाँ पे। ये एयरपोर्ट मेरे पीछे बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, मुरमंस्क एयरपोर्ट, और यहाँ पे भी एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमारे कुछ डिटेल्स चेक किए, जस्ट हम मुरमंस्क एरिया में कब तक है, कब निकलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब बेसिक चीज़ें। बट अभी मैंने यांडेक्स पे एक कैब बुक की है और हम जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे, तो लेट्स गो। मैं फाइनली मुरमंस्क पहुंच गई हूँ और मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, तो उसने ऐसे ही गाड़ी रुकाई, उसने बोला कि आपको फ़ोटो वगैरह लेना है तो लो। ये एक बीच है यहाँ पे मेरे पीछे जो है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एरिया। उसने बोला आप फ़ोटोज़ लो वगैरह, तो वो मैं गाड़ी से उतरी हूँ जस्ट टू गेट सम फोटोज़ एंड बस अब जा रही हूँ मेरे स्टे के पास, विच इज़ दी ऑरोरा विलेज इन मुरमंस्क। So my first stay in Murmansk is at this place called the Aurora Village, and as the name suggests, ये जगह वर्ल्ड वाइड जानी जाती है अपने नॉर्दर्न लाइट साइटिंग्स के लिए, given its prime location. मुरमंस्क सिटी से ये 1 hour ड्राइव पे है, तो you can take a Yandex taxi to like me to arrive. पार्क करते ही आपको बाहर इस विलेज का एक मैप मिलेगा जहाँ ये स्टे सिचुएटेड है, और इसमें लिखा है अबाउट द नियर बाय बीच, प्लेसेस टू विजिट, अ रेस्टोरेंट नियर बाय एंड सो ऑन। एंड अंदर एंटर करते ही यू विल फाइंड योर सेल्फ अमंगस्ट क्यूट इग्लू डोम्ड शेप होम्स, जिसमें से एक मेरा स्टे है। ऑलराइट, तो मैं फाइनली आई हैव चेक्ड इनटू माय स्टे। मैं एक एरिया में हूँ, लाइक आई टोल्ड यू गाइज, मुरमंस्क में। मुरमंस्क आता है नॉर्थ ऑफ रशिया में, और क्या आपको पता है कि रशिया का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है, जो नॉर्दर्न पूरा रीजन है, वो आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। तो बेसिकली इसको आर्कटिक रशिया या रशियन लैपलैंड भी कहा जाता है। And Russia shares its borders with places like Sweden and so on, Finland, तो यहाँ से रशियन लैपलैंड है। ऑलराइट, सो मैं फ़िलहाल इस जगह पे चेक इन कर चुकी हूँ। आज मेरा स्टे यहाँ पे है, मैं यहाँ पे एक रात के लिए रह रही हूँ। मुरमंस्क में मैं 6 दिन हूँ अगले एक हफ्ते के लिए, एंड एवरी डे माई स्टे इज़ अ वेरी डिफरेंट वन बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस वेराइटी ऑफ स्टेज इन द आर्कटिक, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एवरी डे इन योर लाइफ यू विजिट दी आर्कटिक सर्कल, राइट। तो ये यहाँ पे मेरा स्टे एक जो है ग्लास डोम है, और ये इतना सुंदर है, दिस लिटरली इज़ लाइक माई ड्रीम गाइज। मैंने ऐसी जगह पे सिर्फ रहना मैनिफेस्ट किया था, मैं आज एक्चुअली ये जगह पे हूँ, आई स्टिल कांट बिलीव इट। तो मैं अभी फ़िलहाल जो मुझे ना फ्लाइट में ग्रीक योगर्ट दिया था, मैंने रख लिया था, तब मुझे खाना नहीं था। आई एम जस्ट सिटिंग हियर टेकिंग इन दिस ब्यूटिफुल प्लेस, आई एम हैविंग माई योगर्ट, and in like 2 minutes let me show you guys around this beautiful glass dome stay and also the surrounding area. यहाँ पे एक बीच है मेरे सामने, तो मैं आपको ये जगह दिखाती हूँ। Let me walk you around the dome and the plan for the day. Alright, so this is the dome that I was telling you guys about. It's a glass dome,
और जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पे देर आर स्टेयर्स टू टेक यू अप, जहाँ पे देर इज़ अ लिटिल बेड जो मैं दिखाती हूँ आपको इन अ सेकेंड, एंड ऑन द राइट देर इज़ अ बाथरूम, वो भी आई शो यू इन अ सेकेंड. फर्स्ट लेट्स जस्ट गो इनसाइड. अंदर आके ये 2 सिंगल बेड्स दिए हुए हैं obviously for obvious reasons, and the nice thing is about staying in such a glass dome is that if the northern lights show up, if you are lucky, if it's a good day, then you can just view them from here itself. आपको दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उसको व्यू कर सकते हो. इस जगह का नाम ही उन्होंने ऑरोरा विलेज रखा है. there's a little table here, there's a little dining table, they have their necessities, they have cups वगैरह वगैरह, पानी रखा है, शक्कर रखी है, चाय है यहाँ पे, एंड हीटर्स है. द बेस्ट थिंग इज, सो इवन इफ यू कम इन लाइक एकदम स्टार्क विंटर्स व्हेन इट्स स्नोइंग आउटसाइड इन डिसम्बर एंड जैन, इट्स प्रिटी कंफर्टेबल इनसाइड द डोम्स. 4 हीटर्स लगे हुए यहाँ पे, तो इट रियली वार्म्स अप द स्पेस. एंड यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ. तो यहाँ पे इन्होंने ये कैप्स लगाए हुए हैं फॉर इफ़ यू वांट टू स्टेप आउट और सो. ये जो इनकी रशियन कैप्स है वो है, मैं आपको एक पहन के दिखाती हूँ. Yeah, so this is their typical Russian caps. This is very good to keep you warm during windy days especially. तो ये इन्होंने 2 रखी हुई है just in case you need to wear, and then there are towels and there are bath robes here. I'll tell you in a minute why there are bath robes here. Slippers दिए हुए, there's a little fridge, and let's quickly go up and मैं दिखाती हूँ. वहाँ पे भी 2 बेड्स हैं. Okay, so I was just chilling in the dome for a while. मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी. अभी मैं चल के जा रही हूँ लंच के लिए. So apparently अगर आप ऑरोरा विलेज में रह रहे हो तो आपको आपका जो भी खाना खाना है वो प्री बुक करके इनको बिफोर हैंड बनाना होता है, क्योंकि ये खुद फ्रेश ऑन द स्पॉट बनाते हैं. दे हैव एन इन हाउस रेस्टोरेंट बट दे मेक फूड लाइक फ्रेश, सो यू कांट गो देयर एंड ऑन द स्पॉट ऑर्डर फॉर फूड. तो जैसे कि कल सुबह हमें जो ब्रेकफास्ट खाना है, मैंने उनको अभी से बता के रखा है कि मुझे क्या खाना है और कब कितने बजे खाना है, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड. तो अभी आज लंच और आज डिनर वहाँ पे मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज आई फॉरगॉट टू प्री इन्फॉर्म देम यस्टरडे. तो अभी यहीं पे 500 मीटर पे चल के स्ट्रेट उन्होंने मुझे बताया कि रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको लंच खाना जो भी चाहिए सब मिल जाएगा. सो आई एम जस्ट वॉकिंग देयर. कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना अलग लग रहा है यार. मतलब दिस टेरेन वेयर आई एम वॉकिंग, दिस इज इनसेन. ओके, तो मैं रेस्टोरेंट में तो आ गई हूँ, बट ये जो पूरा मेन्यू है ये रशियन में है और इस एरिया में मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है फ़ोन का फॉर सम रीज़न. तो मैं गूगल लेंस से ये सब रीड नहीं कर पा रही. तो लेट्स सी अगर इनके पास वाईफाई हुआ, फ़ोटो से समझ रहा है बट क्या चीज़ क्या है वो नहीं समझ रहा है. तो लेट्स सी अगर इसके पास वाईफाई हुआ तो मैं जाके पूछती हूँ. तो ये एक टिपिकल रशियन रेस्टोरेंट है जहाँ का मेन्यू इज ट्रेडिशनल रशियन फूड. Russians eat a lot of soup, and in terms of meat they have reindeer and venison meat a lot. But आपको कई वेज ऑप्शंस भी मिल जाते हैं. I ordered some of their specialties and the food was so good. और खाना खा के रेस्टोरेंट के बाहर ही there was a pier, so I decided to take a walk there and spend some time. और वापस चलते चलते एनीवे अभी आप देख रहे हो मैं ये रोब पहन के रेडी हूँ, जो यहाँ पे मैंने आपको सुबह दिखाया था, जो कैप्स रोब्स रखते हैं. दे हैव हीटेड अप द टब फॉर मी आउटसाइड. बहुत ज़्यादा ठंड है एंड द टब इज़ रियली हॉट. आई एम सो एक्साइटेड टू गो आउट देयर एंड जस्ट सिट देयर. एंड टुनाइट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल नाइट, जिसके बारे में हम थोड़े टाइम में बात करेंगे. बट फिलहाल लेट्स गो आउट इनटू द हॉट टब. ओके, सो आई हैव ब्रेव्ड एंड कम आउट. ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मैं बहुत हिम्मत करके अंदर जा रही हूँ. पानी गर्म है अंदर बट वहाँ तक जाना, मैंने अंदर मतलब आई एम जस्ट वेयरिंग अ स्विम सूट एंड
I was just sitting in the tub and I think I can see the northern lights. I can see it right in front of me. Now that is the reason कि Aurora Village is so well known around the world. I mean, what is this luck? मुझे आते ही पहले दिन Northern Lights बिल्कुल मेरे डोम से ही दिखे. I couldn't believe it. But then I also had a tour booked and so I left with them for the Northern Lights hunt. Okay, so we have come for a Northern Lights hunting tour. Basically, आप टूर के लिए और इसकी जो भी डिटेल्स है टूर के मैं आपको इस वीडियो में एक करके बताऊंगी. बट हंटिंग टूर बेसिकली होता है 3 से 5 घंटे जो 9 बजे डिलीवरी स्टार्ट होता है. आपको एक फोरकास्ट बताया जाएगा उस दिन के 6 बजे कि इज इट गुड डे टू गो और नॉट टू गो. तो आपका जो भी टूर गाइड होगा आपको मैसेज भेजेगा एंड आप प्लीज हैव बी रेडी एंड बहुत ही रात के टाइम ऑब्वियसली कमिंग आफ्टर 1 और आपके साथ एक फोटोग्राफर गाइड होगा. देयर बी अ कार, देयर बी ग्रुप टूर और प्राइवेट टूर जो भी आप बुक करो. और ये आपको अपनी सिटी के आउटस्कर्ट से लेके आएंगे. सो बेसिकली तो फुल आइडिया इसकी लाइट पोल्यूशन सबसे कम होना चाहिए. तो बहुत ही जहाँ पे अंधेरा होगा उस जगह पे आना पड़ेगा आपको टू बी एबल टू साइट इट. हमने तो अभी साइटिंग वहीं पे कर ली थी जहाँ रह रहे थे ऑरोरा विलेज में. बट वी कम फॉर दिस टूर आइदर वे. तो लेट्स सी. अभी 9:30 बजे है. बाकी भी लोग हैं. कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है. बहुत ज़्यादा. दैट्स द पॉइंट राइट. सो लेट्स होप, लेट्स वेट. और कुछ 2 घंटे के आसपास वेट करने के बाद फाइनली शी वाज देयर. Lady Aurora, and what a show. She was so beautiful. And then our driver dropped us back home. लेकिन रास्ते में बहुत तेज भूख लगी थी and we stopped by to grab some food. So finally the Northern Lights hunt for the day is over and it was a beautiful show. पहला दिन expect नहीं किया था कि इतना अच्छा दिखेगा but it was amazing. And अभी बजे है 1:40 AM and we haven't eaten anything like since evening. जब मतलब जैसे ही lights दिखे भाग के बाहर चले गए थे and we just got done with it now. तो अभी we stopped by. यहाँ पे ना McDonald's का एक local version है. Like I'll show you the logo in a bit. तो इनका एक local McDonald's है, Russian McDonald's. So we just grabbed something from there. Quickly grab a bite और cab book की है अभी. तो टैक्सी से बैक टू ऑरोरा विलेज. Good morning from day 2 in Murmansk. As you can see, it's a bright and sunny day. 9 बजने वाले हैं सुबह के and the weather is so यहाँ पे weather every minute change हो रखा है. It's very sunny at some point, gets cloudy at some point. Sometimes it's very clear. The night of course is dramatic. It's different. And आज today is my second day out here. So let's see. आज जो मैं जहाँ पे हूँ मुरमंस्क में, यहाँ से आई एम गोइंग टू फर्दर नॉर्थ फ्रॉम हियर विच इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज तेरीबरका. और ये जो जगह है माना जाता है दिस इज़ अपेरेंटली अर्थ्स एज क्योंकि इसके ऊपर और नॉर्थ में कुछ है ही नहीं. सो दिस इज़ गोना बी लाइक द टिप ऑफ द आर्कटिक सर्कल सो टू से फ्रॉम द रशियन रीजन. तो लेट्स सी. आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी विजिटिंग द एज ऑफ द अर्थ. अभी तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगी. इन्हीं का एक इन हाउस रेस्टोरेंट है ऑरोरा विलेज में. सो यू कैन रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कल बताया था आपको प्री ऑर्डर करना है. मैंने कल रात को इसको बता दिया था. तो अब जाके ब्रेकफास्ट करूँगी, गेट रेडी एंड देन हेड आउट. वी हैव अ टूर टुडे जिनके साथ कल मैं नॉर्दर्न लाइट्स देखने गई थी. उन्हीं का टूर है. So you can do it by yourself, but I thought it was better to book a tour with a company who knows the place in and out to take us here. So so I'm just going to get ready and wait for the driver to come and take us. और निकलने से पहले I sat down to grab a quick breakfast at Aurora Village itself.
गाड़ी आ चुकी है. इट्स अ प्राइवेट टूर टुडे. तो बस मैं ही हूँ और इट्स टाइम टू गो टू तेरीबरका. लेट्स गो. और फिर मैं पहुंची at the graveyard of ships. Apparently, Teriberka was a flourishing fishing town, लेकिन 1980s में फिशिंग इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के बाद से इन शिप्स को यहीं अबैंडन छोड़ दिया गया और यहाँ बस ये एक शिप का ग्रेवयार्ड बन के रह गया. Just adding to the rustic charm of the beautiful town of Teriberka. Alex, my driver and guide for the day, took me for lunch at this beautiful restaurant जहाँ मैंने कुछ local Russian soup try किया and it was so filling and amazing. By the way, मैंने इस episode में जितने भी tours लिए हैं, I will mention all their names and handles in the video's description, so don't forget to check it out if you also want to book tours with them. Also, take a moment to quickly hit the subscribe button in case you still haven't, ताकि आगे के सारे episodes आप तक पहले ही पहुँच जाएं. So a hearty lunch later, Alex took me to one of the most beautiful places I could think of to see the Arctic Ocean. Now it truly feels like yes, I am at the edge of the earth. So just on our way to Teriberka, हम यहाँ पे रुके हैं. ड्राइवर ने हमें कुछ यहाँ पे गाड़ी रुकाई है क्योंकि जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, that my friends is the Arctic Ocean. Who would have imagined? I didn't imagine in my right senses that I would actually get to experience and see and watch the Arctic Ocean right in front of my eyes. It's right there and I feel so lucky to be able to witness it from this close. Today definitely seemed like a dream. पहले ही दिन Northern Lights देख लिए. I came to the literal edge of the earth. Arctic Ocean इतने पास से देख लिया. What more could I have asked for? Maybe some rest? Not really, but it was time to check into my hotel in Teriberka for the evening, and Alex dropped me at Teriberka Eco Hotel. The hotel is the most ideal and comfy stay if you're looking to stay in the heart of Teriberka, where you can actually say that you stayed at the edge of the earth. They have a cafe and a restaurant, and it's also a great place for something special you'll know in a while. The hotel was nice enough to also host me for a nice dinner at their in-house restaurant, and the food and especially the desserts were to die for. और फिर रात होते होते it was time to wait and see if the Northern Lights show up today. तो ऐसे ही कैजुअली मेरे रूम का विंडो ओपन किया एंड
Yes, now you know why this place is so special. The hotel's owner and I ran up to the terrace to witness one of the best Aurora shows ever. Hello and a very good morning from Teriberka. आज मेरा टेरीबर्का में सेकंड मॉर्निंग है. कल मैं आई थी यहाँ पे. We saw the phenomenal Aurora show last night. The northern lights were insane in this area. मतलब crazy sighting था. कल का KP index 4 था, which is why it was so strong, so prominent. अभी सुबह उठ के मैं आई हूँ breakfast करने. It's 10 a.m. and today I'm supposed to be driving back to Murmansk, but before my driver will come at 12. तो वो आए, उसके पहले मैं बस उठ के नीचे ही आई हूँ. I'm going to have breakfast at the hotel itself. And and then we will just be heading out on the way to Murmansk. Today is also a special day. We have something very special planned. Well, it's time to end this video here. वरना video forever लंबा चलता रहेगा. लेकिन this is just the beginning. Aurora Village और Teriberka के बाद हमारा सफर बढ़ता है कुछ नए Arctic adventures की ओर, and I cannot wait to share them with you in episode 3. Don't forget to like and share this video with friends, and also get people to subscribe to the channel so that I stay motivated enough to create more and more content for you guys. See you in episode 3.